So the last topic which we are seeing of this chapter, refraction of the light, that is partial and total internal reflection. When light enters a rarer medium from a denser medium, it gets partially reflected. That is, part of the light gets reflected and comes back into the denser medium. As per the laws of the reflection, this is called as the partial reflection. The rest of the light gets refracted and goes into the rarer medium. As light is going from a denser to the rarer medium, it bends away from the normal. That is, the angle of incidence I is smaller than the angle of refraction R. This is shown on the left side of the figure 6.9. If we increase I, R will also increase according to the Snell's law, as the refractive index is a constant. For a particular value of the I, the value of the R becomes equal to the 90 degree. This value of the I is called as the critical angle. For angles of incidence larger than the critical angle, the angle of refraction is larger than the 90 degree. Such rays return to the denser medium as shown towards the right in the figure 6.9. Thus, all the light gets reflected back into the denser medium. This is called as the total internal reflection. We can determine the value of the critical angle the as follows. So यहाँ पर इतना जो description दिया है, that is when light enters a rarer medium from a denser medium, it gets partially reflected. That is, part of the light gets reflected back and comes back into the denser medium as per the laws of refraction. Suppose यहाँ पर जो diagram दी है, इसकी मदद से हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर वाटर एक मीडियम है, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम एज यू ऑल नो. एयर अगेन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. मीन्स वी आर हैविंग द टू मीडियम्स फॉर द विच वी आर रिक्वायर्ड फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. यहाँ पर क्लियर यहाँ तक. So when light enters a rarer medium from a denser medium, मतलब denser medium जो कि water है obviously, and rarer medium that will be the air. So when the light enters from the denser medium to the rarer medium, it bends away from the normal that we have seen. यहाँ पर हम देख सकते हैं. और जब रिफ्रैक्ट होती है लाइट, सो सम पार्ट्स ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम एज पर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन. दैट इज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट विल बी द आर. दैट two angles will be equal as per the laws of the reflection. The rest of the light gets refracted and goes into the rarer medium. और जो remaining part of the light है, that will be the refracted into the rarer medium. लेकिन कुछ light reflect होगी denser medium में. As the light is going from the denser medium to the rarer medium, it bends away from the normal, that is angle of incidence I is smaller than the angle of refraction. This is shown on the left side of the figure 6.9. If you increase the I, R will also increase. मतलब ऑब्वियसली है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम अगर देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर एज कंपेयर्ड विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दो चीजों की हमें यहाँ पर मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम देख ही रहे कंसेप्ट दैट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो वी हैव टू कंसिडर बोथ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल. तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो रिफ्रैक्शन का क्या यहाँ पर कहना है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर है एज कंपेयर्ड विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो लाइट और जो कि लाइट रे है वो बेंड्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल है. सो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लार्जर. बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, इफ वी इंक्रीज द आई, मतलब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाते ही जाएंगे, सो क्या अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. क्यों ऐसा होगा? बिकॉज वी आर रिफ्रैक्ट कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. वी आर टेकिंग साइन आई टू द साइन आर, दैट इज द रेशियो. और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाते जाएंगे, सो एट वन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस. जब आई की वैल्यू, जब क्रिटिकल एंगल जब हम बोलेंगे आई को, सो व्हेन वी कॉल इट एज व्हेन द रिफ्रैक्शन जो एंगल है रिफ्रैक्शन का, जब वो 90 डिग्री हो जाएगा, सो एज वी कैन सी हियर दैट इज 90 डिग्री. सो लाइट क्या होगी? दैट लाइट विल बी अपीयर टू एज अ स्ट्रेट लाइन. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर
मतलब यहाँ पर ना तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ना तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बैक इनटू द डेंसर मीडियम। सो इस टाइप ऑफ जो एंगल यहाँ पर क्रिएट होता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस वी आर कॉल्डिंग इट एज द क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल क्या है? व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द 90 डिग्री, light ray neither gets reflect, neither nor gets refract. So at that point the angle of incidence is called as the critical angle. That is the critical condition which we are seeing here, due to which it is called as the critical angle. Clear up to this? Then अगर critical angle मतलब अगर और मैं angle of refraction को और अगर बढ़ाते चला जाऊँ, so at the certain point the angle of incidence will be greater than the critical angle. मतलब 90 डिग्री से अगर ज्यादा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, सो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाने के बदले पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है डेंसर मीडियम, उसी मीडियम में। एंड दिस इज ओनली द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट विच इज ऑब्जर्व्ड हियर। दिस इज ओनली द कंसेप्ट। सो यहाँ पर स्नेल्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखेंगे, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। आर क्या है? 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव एंगल दैट इज 90 डिग्री। साइन 90 हमें पता है, साइन 90 वैल्यू इज 1। सो दैट विल बी साइन आई अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू साइन आई। दैट विल बी द angle of incidence only, which we can see. Rainbow is a beautiful phenomenon, natural phenomena. It is combined effect of a number of natural processes. It is a combined effect of the dispersion, refraction, and total internal reflection of the light. It can be seen mainly after a rainfall. Small droplets of the water act as a small prism. When light rays from the sun enter these droplets, it gets refracted and dispersed. Then there is an internal reflection as shown in the figure, and after that, once again the light gets refracted while coming out of the droplet. All these three processes together produce the rainbow. ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे, मतलब ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट द क्वेश्चन में आस्क्ड हाउ द रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कुछ भी जो कि रेनबो के इसमें ये सारे फिनोमिना कैसे ऑकर होते, दैट प्रोसेस दे में आस्क टू राइट डाउन इन द एग्जाम। सो रेनबो क्या है? इट इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फेनोमेना ऑफ द वेरियस डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द लाइट। और वही इफेक्ट जो कि अब तक हमने पढ़े हैं, इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ये तीन फिनोमेना के इस ऊपर जो कि फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो है वो होता है। सो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर के, सो दैट दे अपियर्स टू बी द प्रिज्म। और जो सनलाइट होती है, दैट एक्ट्स एज अ व्हाइट लाइट। और हमने देखा ऊपर कि जब व्हाइट लाइट, सनलाइट जो कि प्रिज्म से पास होती है, इट गेट्स स्प्लिट इनटू द विबग्योर, दैट इज द सेवन स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। Or due to which it appears to be as the rainbow appears to in the seven colors. It can be seen mainly after a rainfall. Small droplets of the water act as a small prism. When light rays from the sun enter these droplets, it gets refracted and dispersed. जब ड्रॉपलेट्स के ड्रॉपलेट्स के यहाँ पर जब लाइट रेज सन के इंटर होते हैं, सो दे गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स दैट मीन्स द व्हाइट लाइट गेट सेपरेटेड इनटू द सेवन कलर्स। और when light rays from the sun enters these droplets, it gets refracted and dispersed. Then there is a internal reflection as shown in the figure. और यहाँ पर जो है कि internal reflection occur होता है on in the water droplets as we can see here. And as shown in the figure, and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet. और वापस एक बार refraction होता है when light gets come out from that water droplets. सिंपल सी प्रोसेस है, क्या ध्यान में रखना है, दैट आई विल टेल इन शॉर्ट। लाइट रेज है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, दैट दे आर एक्टिंग एज अ प्रिज्म, बराबर। देन सनलाइट जो है वो लाइट रेज एंटर कर रही है वाटर ड्रॉपलेट्स के इसमें। और वाटर ड्रॉपलेट्स के इसमें सबसे पहले लाइट डिस्पर्स्ड हो रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है। दिस टू कंडीशंस व्हेन लाइट एंटर्स इनटू द ड्रॉपलेट। और वहां पर ड्रॉपलेट के अंदर इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। और ड्यू व्हेन लाइट कम्स आउट फ्रॉम दैट वाटर ड्रॉपलेट्स, सो वहां पर जो लाइट जब वापस आती है बाहर वाटर ड्रॉपलेट से, दैट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स एज अ डेंसर मीडियम। और जो बाहर की जो एयर है, दैट इज द रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जाएगी, सो लाइट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अगेन we observe the refraction of the light. So
we are having two solved examples here. The absolute refractive index of the water is 1.36. Absolute refractive index of the water हमें यहाँ पर 1.36 दिया है. What is the velocity of the light in the water? और water के इसमें हमें velocity of the light पूछी गई है. Velocity of the light in the vacuum, और हमें पता है that we have to keep in mind, अगर दी भी होगी नहीं भी दी होगी, that will be the 3 into 10 raised to 8 meter per second, that is the constant value of the velocity of the light. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें का वेलोसिटी ऑफ द लाइट हमें वाटर में फाइंड करनी है. सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड और फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड. वी आर हैविंग v1 upon v2. So velocity of v1 we are given here 3 to 10 raised to 8. Refractive index 1.36. Refractive index formula as per refractive index formula n is equals to v1 upon v2. Refractive index दिया है 3 into 10 raised to 8. V2 value we can able to calculate, that will be 2.21 into 10 raised to 8 meter per second. अगर हम देखेंगे, so what we observed here, velocity of the light in the water क्या कम हो गई है? Yes, obviously that in the rarer medium velocity of the light will be larger as compared with the denser medium. Light travels with the velocity 1.5 into 10 raised to 8 meter per second in a medium. On entering second medium, its velocity becomes 0.75 into 10 raised to 8 meter per second. What is the refractive index of the second medium with respect to first medium? Refractive index of second medium with respect to the first medium हमें पूछा गया है. So हमें क्या दिया गया है? Velocity of the light. Light travels with the velocity in a medium. एक पर्टिकुलर मीडियम में velocity of the light 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड है. और ऑन एंटरिंग सेकंड मीडियम वेलोसिटी ऑफ द लाइट सेकंड मीडियम की भी हमें 0.75 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड दी गई है. और हमें व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हमें पूछा गया है. सो ऑब्वियसली दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम एज पर द refractive index formula. We have to just keep put the values 1.5 into 10 raised to 8 upon 0.75 into 10 raised to 8, which will be equal to the 2. So the refractive index of the second medium with respect to the first medium will be 2. So here we conclude with the chapter refraction of the light. Again, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होंगे, एनी क्यूरी रिगार्डिंग विद दिस, अगर एक्सरसाइज में कुछ डाउट होगा, कुछ न्यूमेरिकल में डाउट होगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, दैट यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड विद दैट, सो यू मे कमेंट इन दिस वीडियो. आई विल बी एबल टू ट्राई टू आंसर द कमेंट्स. और जो कि कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछोगे, अगेन वी कैन टेक, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टेकिंग विद द क्वेश्चन सॉल्विंग. सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में अगर डाउट होगा, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, dispersion of the light, refractive index, any, then you may ask in the live chat also. We will take, I will take the 5 minutes more. So if you are having any doubt or questions related with this chapter or any of the chapter above, so you may ask in the comment also or in the live chat, and try to answer, as there are only the two questions for solving in this chapter in the exercise. But मेन मोटो ये है कि मतलब डोंट रिलाई ऑन ओनली ऑन द एक्सरसाइज, एज these are all the phenomena which we are seeing in our environment, which are observable in our surroundings. So ये क्यों हो रहा है, that हमने ऊपर देखा ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की लाइट का डिस्पर्शन देखा हमने, प्रिज्म से पास होता है, रेनबो फॉर्मेशन देखा, दैट इज द नेचुरल फिनोमेना. हमने स्टार की पोजीशन एपरेंट ट्विंकलिंग क्यों अपीयर होते हैं, व्हाई द स्काई अपीयर्स टू बी द ब्लू, mirage formation क्यों हो रहा है. These are all the means the things which are related to with our life that we see in our surroundings and all. So try to science is that it is giving the reason that why the things are happening with the logics and facts. So try to see learn with that facts and all. Or डोंट ओनली जस्ट विद प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. मार्क्स तो मिल जाएंगे, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो मार्क्स ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू गेट दैट मार्क्स बाय राइटिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. बट जो कंसेप्ट है, जो थिंग है, जो रीजन है, दैट वी हैव टू लर्न फॉर दैट. सो दैट्स व्हाई
डोंट रिलाई ओनली ऑन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए बस हो गया, क्वेश्चंस के आंसर्स हमने पढ़ लिए, वो तो करना ही है, दैट इज फॉर द एग्जाम्स प्रिपरेशन, वी हैव टू डू विद दैट, बट जो कंसेप्ट है दैट वी हैव टू लर्न थरोली, तो और समझ लेना है दैट दिस विल बी आल्सो रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर फर्दर हायर स्टडीज आल्सो. So keep in mind with the learn, try to concept, and not just on rely on the exercise questions and all. So if you are having any doubt or the questions, then you may ask. Next, we will be starting with, in the next video, we will be starting with the chapter 7 lenses. Again, this is important. और जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, दैट ऑल द concepts which will be required in the lenses chapter. और lenses again एक मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं lenses. So lenses again with our मतलब डेली लाइफ से भी रिलेटेड है. वी आर wearing the specs and all. So spectacles के अंदर जो lenses होते हैं, how the refraction, reflection और जो कुछ होगा, so we are going to see learning about that in the next video. So now we will be stopping here. So thank you for joining. If you like the video, then uh, do share, subscribe the channel, and also share the video with your friends and all. So thank you.